Okay, good morning my dear children. Today I will continue the same exercise 13.3. Look at page number 251. Question number 3. The statement of the sum is here. A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. देखिए इसके अंदर क्या है, एक कुआं है, कुआं को खोदा गया है, ए वेल इज डग, और कुआं का शेप यू नो वेरी वेल, दैट इज सिलिंड्रिकल शेप. कुआं जो सिलेंडर होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है. Diameter is mentioned and its height, the depth is also mentioned. So you can find out the volume of the earth, means soil here. Digging के बाद जो मिट्टी निकलती है उसको ही हम अर्थ कहा गया है. यहाँ पे उस सॉइल को बिछा दिया गया है इवनली और एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है. आप जानते हैं प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक क्यूबॉइडल शेप में होता है जिसकी लेंथ है 20 मीटर और ब्रेड्थ है 14 मीटर, और हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकल जाएगा. इन दोनों की इक्वेट करके आप हाइट निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेल विच इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट. दे आर सेम. वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, here earth means soil, volume of the earth dug out, खोद के निकाला गया, ये सेम है dug out. And formula you know very well. Formula here is pi 22/7. You can directly put it if you like. Pi r is here 7 diameter, 7/2 radius, 7/2 into 7/2 r square. H is also given here 20. So you can, it is very simple, you can do the calculation. 2 cancel out. Here you will get 1170 meter square. 770 meter square will be the volume of the earth dug out. Now volume of the platform, उसी मिट्टी से प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइडल शेप में होता है. लेंथ इज गिवन हियर 22, ब्रेड्थ इज गिवन हियर 14, 22 हियर and 14 here, and your required height, this is your meter cube, this is not a meter square, this is meter cube. So equate both of them, you get out, you will get h. Do like this, 22 into 14 into h is equal to 770. Then you can find out h. You can calculate h, 770 upon 22 multiply by 14, 770. So you can do like this, 211, 2 3s are okay. So 35 I think. Then 7 2s are 14, 7 5s are 35. 5/2 meter you can write is equal to 2.5 meter. This is the required answer. 25, 2.5 meter. 2.5 meter is the required answer. This will be the height of the height of the platform. Okay. My question is finished. Now I will proceed to question number 4.
Yes. Now this question number 4. It is a good question, somewhat similar to the previous question. That is question number 3. Now question number 4. I am reading it out. A well of diameter 3 meter is dug 14 मीटर डीप. एक कुआं खोदा गया है जिसका डायमीटर 3 मीटर है, यानी कि उसका रेडियस 1.5 मीटर है. ये आपका वेल है. मैं आपको ये थोड़ा इसमें यू हैव टू मेक फिगर ऑल्सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली. यू draw a circle of radius 1.5 meter. This is your well. This depicts your well. तो ये क्या, इसका आपको डेप्थ यहाँ आप दिखा नहीं पाओगे, ये ऊपर का. दिस इज योर टॉप व्यू. टॉप व्यू इसका ऐसा ही है इस फिगर का, और बाकी आप वो डेप्थ नहीं दिखा पाओगे. ऊपर से दिखाने से आपको समझ में आ जाएगा. द अर्थ मीन्स सॉयल, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट. इसमें से जो सॉइल निकाला गया उसको स्प्रेड कर दिया गया. उसकी मुंडेर, एम्बैंकमेंट मतलब मुंडेर को बोलते हैं. इसके साइड में जो आप दिख रहा है इसको, तो इसको एक ऊंचा कर दिया जाए ताकि आदमी गिरे नहीं, इसके अंदर कोई बच्चा वगैरह गिरे नहीं. एम्बैंकमेंट, इसी मिट्टी से एम्बैंकमेंट बना दिया गया है, और एम्बैंकमेंट की चौड़ाई 4 मीटर है. दिस A to B is 4 meter, and O, this center of the well, O to A is this the periphery of the. You can see also this A point lies on the circumference of the well. This OA is 1.5 meter. Radius is 1.5 meter, and AB, this is the width of the embankment. It is 4 meter. So total 1.5 is equal to 4 is equal to 5.5 meters. Outer dia of the embankment. Outer dia of the embankment is 5.5 meter. Now you can do like this. First, volume of the earth, volume of the well. Volume of the well is equal to volume of the earth dug out. पिछले क्वेश्चन की तरह है. Volume of the well is equal to volume of the earth dug out. Earth dug out. This volume of the well, volume of the earth dug out, ये आपका हो जाए. This will become, you know the formula, pi into r. R here is 1.5 centimeter. So volume of the earth dug out is 1.5 into 1.5 into this. You can replace by 22/7. This is height. Height is given 14 meter. That means depth. You can say depth also 14 meter. So it will cut out, 7 and 2 cancels out. So you will get here. You will get here, or you can you can have here 22 into 1.5 into 1.5 into 2. This is so 22 into 1.5 into 3. This means 4.5. So 22 into 4.5. This will be meter cube. Will be the volume of, right, 1.5 into 3, 1.5 into 3 over 22 will be the volume of the earth, volume of the soil dug out. So I will keep it here, and as I have lack of space, I have to rub it and proceed further. Now I will come to this embankment part. Embankment part. You know, outer dia. This includes the embankment. Radius is 4.5 centimeter.
outer radius of the embankment (1.5 plus 4) 5 plus 4, that is 5.5 meter. This is your outer radius of the embankment. After that you can find out the area of the ring. एक रिंग हैज जनरेटेड विद द सॉइल. ये एक ऊंचाई है, रिंग भी है, साथ में ऊंचा भी है, ये उसकी हाइट है. तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रिंग एंड मल्टीप्लाई विद एच. यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. उसको इक्वेट करना है. तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग सेक्शन, एरिया ऑफ द ring region of the ring. So you know very well, this will be your सर्कल का एरिया. आउटर सर्कल का एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो ये रिंग का एरिया मिलेगा. दिस इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल 4.5 pi r square minus radius of the inner circle 1.5 pi 1.5 square. If you subtract it, you will get the area of the whole ring. So I am doing that. Pi r square is the area of the circle. So you have need the concentric circle are there. Pi r square. R square means here 5.5 square minus pi into 1.5 is the inner radius square. Understood? Now you can proceed further. You can take out pi as common, and remaining is 5.5 square minus 1.5 square. You can write like this, and you can apply this formula. It will be easier, and a bit it will become simple. Your a minus a square minus b square, that identity, a plus b into a minus b. तो आपको इजी पड़ेगा. आइडेंटिटीज हमें कैलकुलेशन इजी कराती हैं. तो इसको खोल लीजिए. 22/7 यहाँ बीच में आ जाएगा a प्लस बी. 5.5 प्लस 1.5 और इसमें 5.5 a माइनस बी माइनस 1.5. तो यू विल गेट हियर, you must remember this, 22 into 4.5. This is the volume of the earth dug out. You have to equate it. Then 22/7 into 5.5 1.5, it will become 7. 1.5 4 1.5 and 1.5 4 cancel out, 88. So you will get 88 meter cube. So this is, but this is the area. You have to multiply it with h to get the volume. From area to volume, you will get the volume of the embankment. Volume of the embankment. So multiply it with h. This is the height. You have to find out the height of the embankment. So multiply height with area, 88. Then equate both of them, you will get the answer. H into 88 is equal to 22 into 4.5. H is equal to 22 into 4.5 upon 88. So 4 cancel out. You will get 4.5 upon
4.5 upon 4. If you simply, or you will get, after simplification, you will get 1.125 meter is the height of the embankment. This is the answer. Height of the embankment will be 1.25. Okay. So I have finished this. I will do next sum tomorrow. So it is okay. Have a nice day. Good day.